Hello students, here we will see motion and its types, that how many types of motion is there and in which part we can divide the motion. Okay, so let us see what is motion. So here motion, we can see we already know the definition of the motion, that the movement of an object from one position to another position with respect to observer. Observer means who is seeing that object. Suppose if an object is moving and we are seeing that object, it means we are the observer. Okay, and और द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज मोशन. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और ऑब्जर्वर, हम बोलेंगे कि ये किसमें है, मोशन में है. अब ये मोशन भी कितने तरह का हो सकता है, तीन तरह का हो सकता है. सपोज नंबर वन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इट मीन्स मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन, विच इज ऑल्सो नोन एज द रेक्टिलिनियर मोशन. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ हाईवे. नेक्स्ट वन इज, if we see that the uniform motion, what is uniform motion and what is non-uniform motion, the most important part of this chapter, because every quantity, every physical quantity will be divided into the two parts, that is uniform and non-uniform. So what is uniform? Suppose a car is moving on a straight path. Okay, it is taking 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour and 5 hour almost, and it is covering 1 kilometer in first hour, in second to 2 kilometer in second hour, and third kilometer in fourth hour, and 4 kilometer in fifth hour. So we can see it at every time that it has covered total 4 kilometer. But when we need to check that it is the it is what, it is a uniform or non-uniform motion, we need to see that the distance covered in particular time interval. Suppose here we can see 2 minus 1, when we are subtracting, it is 1 hour, and it is covering 1 kilometer in this particular time. Similarly, 3 minus 2, it is again 1 hour. Okay, it is covering 2 kilometer in 1 hour in the next 1 hour. Okay, similarly 4 minus 3, it is again 1 hour, and it is covering 3 kilometer. Okay, similarly 5 minus 4, it is again 1 hour, and it is covering 4 किलोमीटर. मतलब हर बार 1 घंटे में ये 1 किलोमीटर तो कवर कर नहीं रहा है. पहले बार में इसने 1 किलोमीटर कवर किया, इन नेक्स्ट टाइम इट इज कवरिंग 2 किलोमीटर, इन थर्ड टाइम इट इज कवरिंग 3 किलोमीटर इन 1 hour. Okay, so in next 1 hour it is covering 4 kilometer. So it is what, it is non-uniform motion, because every time it is covering different distances इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, वी कैन सी कि पहले 1 घंटे में इसने 1 किलोमीटर कवर किया, दूसरे 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में 3 किलोमीटर, और फोर्थ वन में इसने टोटल 4 किलोमीटर कवर कर दिया 1 घंटे में. सो वी विल से दैट व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, that is also known as what, non-uniform motion. If we need to check another example, suppose a car is moving on a straight path, it is 1 hour, it is 2 hour, it is 4 hour, it is 6 hour, it is 9 hour. Okay, but every time it is covering 1 kilometer, 1 kilometer. Okay, 1 kilometer, 1 kilometer. In first 1 hour it is covering 1 kilometer. ओके, और अगली बारी में यानी कि 2 घंटे में इसने कवर किया कितना, 1 किलोमीटर, और अगले 2 घंटे में इसने कवर किया फिर से 1 किलोमीटर, और अगली बार 3 घंटे लगे इसे 1 किलोमीटर कवर करने में. यानी कि कोई कार अगर रोड पे चल रही है, इट मीन्स व्हाट, इट इज़ कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. डिस्टेंस हर बार उतनी ही कवर की इसने, 1 किलोमीटर इसे कवर करनी थी, सो इट वॉज covering 1 kilometer every time, but it is taking different time to cover 1 kilometer distance. Okay, so we can see it is covering 1 kilometer in 1 hour, it is covering 1 kilometer in 2 hour, और next 1 kilometer it will cover in 2 hour. उसके अगला 1 किलोमीटर कवर करेंगे 3 घंटे में. तो मतलब है कि ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बिकॉज अ कार इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस
every time but unequal interval of time. ओके हर बार उसे एक ही डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग समय लग रहा है. इट मीन्स व्हाट, इट इज़ ऑल्सो अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो हमने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह का हो सकता है, दैट अ कार इज कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस in equal interval of time, or a car is covering equal distances in unequal interval of time. So both the types are of non-uniform motion. Now let us see what is uniform motion. Suppose a car is moving, it is covering 1 kilometer in let us see, first give time, 1 kilometer, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour and 5 hour. It is covering 1 kilometer in first part, again 1 kilometer in second part, again 1 kilometer in third part, again 1 kilometer in fourth part. Okay, so it is covering what, 1 kilometer in 1 hour. हम क्या करेंगे 1 आवर निकालने के लिए, फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे कि दो में से एक को घटाएंगे एक ही आएगा. तो इस एक घंटे में इसने 1 किलोमीटर कवर किया. सिमिलरली 3 - 2 विल बी 1 आवर and it is covering 1 kilometer. Similarly 4 - 3 will be 1 hour and it is covering 1 kilometer. Similarly 4 - 5 is 1 hour. Okay, it is covering 1 kilometer. So every time it is covering equal distances in equal interval of time. Interval means we are subtracting final time. Final time में से initial time को हमने subtract कर दिया. So it is covering what? It is covering equal distances in equal interval of time. So such kind of motion is known as what? Uniform motion. So we can define when an object covers equal distances in equal interval of time, it is known as what? It is known as uniform motion. In whole chapter we will divide every quantity in the two parts, that is uniform motion and non-uniform motion. Like if we are talking about speed, so we will say that what is uniform speed and what is non-uniform speed. Okay, if we are talking about velocity, we will divide that in uniform velocity and non-uniform velocity. So we will see these topics in the next part.